Okay, students. So let's get started with May June 2022 paper 1 variant 2 1 hour का paper. Let's get started with this. थोड़ा सा zoom in करते हैं. Let's see this. Okay. So a force of 3 Newton and a force of 4 Newton acts on an object. What is the maximum possible resultant of these forces? बेटा जब भी आपने मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है ना, whenever you have to calculate the maximum resultant force, क्या करोगे आप दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, 4 + 3 को ऐड कर दो, you get your maximum resultant force, that is 7 Newton. C is your answer. Simple. A length of copper wire is labeled length 0.5 meter, diameter 0.5 millimeter. Which instruments are most suitable to measure accurately the length and diameter? देखो length एक larger measurement है. You will not use vernier calipers for that. You will use a meter rule for that. Diameter एक small measurement है. You will not use a meter rule for that. You will use a micrometer for that. B is your answer. Okay. The graph shows the speed time graph for a parachutist to jump from a plane but does not open his parachute immediately. At which point does he open his parachute? बेटा देखो जब आपका पैराशूटिस्ट अपना पैराशूट ओपन करेगा लाइक दिस, व्हाट विल हैपन? When you open the parachute, your force of air resistance will become much larger compared to your weight. आपकी एयर रेजिस्टेंस की फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू योर वेट. व्हाट विल दिस रिजल्ट इन? दिस विल कॉज वेलोसिटी टू डिक्रीज, या इसको आप क्या कह सकते हो, दिस विल कॉज डिसैलरेशन. ये डिसैलरेशन कॉज करेगा. क्यों कॉज करेगा? बिकॉज एज यू ओपन द पैराशूट योर सरफेस एरिया इंक्रीजेस, योर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, your velocity will decrease. Where is your velocity starting to decrease? At point B. At point B, you are opening the parachute. Perfect. A 60 kg passenger enters the stationary lift. The gravitational field strength is 10. How much force does the floor How much force does the floor of the lift exert on the passenger when the lift accelerates upward at 2 meters per second square? अच्छा इसको बना लेते हैं, चलो let's draw it. Maybe that will make things much more clear. ये आपकी एक लिफ्ट है. इसमें एक, let's say you have a person like this. Perfect. ये आपका person आ गया. Okay. And इस person का weight जो है वो डाउनवर्ड आ कर रहा है. That is 60 into 10. That is 600 Newton. Person का weight बेटा डाउनवर्ड आ कर रहा है. That is 600 Newton. And this lift is accelerating upward at a value of 2 meters per second square. You have to calculate what? You have to calculate the upward force. आपने upward force लगानी है, निकालनी है, that the floor of the lift applies on the passenger. First of all, what will you say? Let's calculate the resultant force. Resultant force किसके equal होगी? The upward force minus the downward force of 600. रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स माइनस 600. मास क्या है बेटा? 60. एक्सेलरेशन क्या है? 2 इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स माइनस 600. 600 को दूसरी साइड पे ले जाओ. 120 प्लस 600 इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या आ जाएगी? 720 न्यूटन इज योर अपवर्ड फोर्स. सिंपल एज दैट. D is your answer for 4. क्वेश्चन 4 का आंसर आपके पास क्या आ गया बेटे? D आ गया. लेट्स फर्दर मूव अहेड. द डायग्राम शोज द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है, मून ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ. विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स की क्या डायरेक्शन है? द मून इज ऑर्बिटिंग इन अ सर्कल. रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. इज योर आंसर. A measuring cylinder containing water is placed on a balance. A stone is placed into the water. The diagram shows the reading on the balance and on the measuring cylinder. ठीक है, देखो आपकी मास की रीडिंग before inputting the stone was 55 grams. The final reading of mass was what? 92.5.
आपकी इनिशियल रीडिंग ऑफ वॉल्यूम क्या थी? 20। फाइनल रीडिंग ऑफ वॉल्यूम क्या है बेटे? 35। ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है? डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है भाई? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास ओवर वॉल्यूम। बेटा मास कैसे निकालोगे आप? यू विल कैलकुलेट द मास बाय टेकिंग द फाइनल मास माइनस द इनिशियल मास। वॉल्यूम किस तरह निकालोगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बेटा फाइनल मास क्या है? 92.5। इनिशियल मास क्या है? 55। फाइनल वॉल्यूम क्या है? 35। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 22। व्हाट डज योर डेंसिटी कम्स आउट टू बी? हाँ जी, डेंसिटी निकालो जरा। हम्म, निकालो जरा डेंसिटी। What does your density comes out to be? 2.5 grams per cm cube is your density. C is your answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर is C. Let's further move ahead. The diagram shows a uniform, solid, rectangular block of weight 50 Newton that is pivoted about P. Actually, ये आपका pivot है. The height of the block is 40 centimeter. The base of the block is 8 centimeter wide. Which horizontal force F just makes the block start to rotate about P? क्या करोगे? You will say anti-clockwise movement is equals to clockwise movement. बेटा ये फोर्स ऑफ F आपके ब्लॉक को किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. What will be the clockwise movement? Force of F into the distance, that is 40. Clockwise movement क्या आ गया? 40F. अच्छा जी, ये वेट की फोर्स आपको किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या आ जाएंगे? 50 into this distance, that is 4. This comes out to be 200 Newton centimeter. Can we equate both of them? Yes, 200 is equals to 40 F. F किसके इक्वल आ जाएगी? 200 divided by 40. That comes out to be 5 Newton as your force. B is your answer. 7 का आंसर क्या हो गया भाई? B. 5 Newton is your answer. Let's further move ahead. The center of mass of a solid rectangular block is at its center. ठीक है. A small heavy weight is available. Okay. In which arrangement is the center of mass the lowest? अच्छा जी, center of mass को हमने lowest करना है. How will we do that? With face x on the table. ठीक है. फेस एक्स को हमने टेबल पे लगाया तो दिस इज योर. अगर मैं फेस एक्स को टेबल पे लगा दूंगा तो समवट लाइक दिस. योर हाइट विल इंक्रीज. ओवरऑल हाइट ऑफ द ब्लॉक विल इंक्रीज. तो ये तो नहीं हो सकता. प्लेस फेस वाई ऑन द टेबल. या ये हो सकता है अगर फेस वाई को अगर आप टेबल पे प्लेस कर दो इस तरह, समवट लाइक दिस, तो आपकी हाइट क्या होगी? डिक्रीज कर देगी. योर हाइट विल डिक्रीज कंपेयर टू व्हेन यू प्लेस फेस एक्स ऑन द टेबल. अगर फेस वाई को आप टेबल पे प्लेस करते हो आपकी ओवरऑल हाइट डिक्रीज हो जाएगी. योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल डिक्रीज. द सेंटर ऑफ मास विल डिक्रीज. बी इज योर आंसर. Raju, which point is the limit of proportionality? Limit of proportionality is the point where the force versus extension graph stops being linear. Limit of proportionality कौन सा point होता है जहाँ पे force versus extension graph stops being linear? See your answer. An elastic spring has an unstretched length of 30 centimeter. L not आगे. A load of 6 Newton is hung from the spring and the length of the spring is 66 centimeter. अच्छा जी, जब आपने फोर्स लगाई 6 न्यूटन की तो आपकी टोटल लेंथ क्या हो गई? 66 सेंटीमीटर. अब थोड़ा सा गौर करो बेटा. टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज व्हाट? अनस्ट्रेच लेंथ प्लस एक्सटेंशन. टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग किस चीज का समेशन है? अनस्ट्रेच लेंथ प्लस एक्सटेंशन. अनस्ट्रेच लेंथ क्या है? 30 प्लस एक्सटेंशन इज इक्वल टू 66. एक्सटेंशन किसके इक्वल आ जाएगी? 66 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. अगर आपकी फोर्स 6 न्यूटन है तो आपकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी बेटा? 36 सेंटीमीटर. सिंपल एज दैट. The 6 Newton load is removed and the spring returns to its original length. Now a load of 2 Newton is attached from the spring. Okay, what is the new length?
अब देखो थोड़ा सा गौर करो, अगर 6 न्यूटन की फोर्स लगाई थी तो यू वर गेटिंग एन एक्सटेंशन ऑफ 36 सेंटीमीटर। 2 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो कितनी एक्सटेंशन मिलेगी? रेशियो मेथड। x comes out to be what? 2 into 36 divided by 6, 1 6, extension comes out to be 12 सेंटीमीटर। आपने सिर्फ एक्सटेंशन थोड़ी निकाली, आपने तो टोटल लेंथ निकालनी। टोटल लेंथ इज इक्वल टू अनस्ट्रेच लेंथ प्लस एक्सटेंशन। अनस्ट्रेच लेंथ क्या है बेटा? व्हाट इज योर अनस्ट्रेच लेंथ? हाँ जी, 30 प्लस एक्सटेंशन क्या है? 12। योर टोटल लेंथ कम्स आउट टू बी 42 सेंटीमीटर। सी इज योर आंसर फॉर 10। आगे बढ़ते हैं। A barometer is an instrument used to measure the atmospheric pressure. In one type of a barometer, the height h of a liquid in a tube is measured. Okay. In which diagram does height h represents the atmospheric pressure? Beta, first of all, तो ये जो barometer है ना, this does not look like A, neither like B. Barometer सही बना हुआ ही नहीं है A और B में। C और D में the barometer is correct. Now we have to identify कौन सी height atmospheric pressure को represent करती है। The height h labeled in D represents the atmospheric pressure because यहाँ पे top side पे क्या है बेटा? Vacuum है। The height h in D represents the atmospheric pressure because top side पे आपके पास क्या है? Vacuum है। अब आ जाओ 12 पे। दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ये मैनोमीटर के सवाल हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। कभी भी इस तरह की यू शेप ट्यूब आएगी, दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड। Which device provides a continuous steady energy output for the longest time? अच्छा जी, longest time के लिए कौन सा steady energy output provide करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। सिंपल। we अच्छा ठीक है। A load is pulled by a rope attached to a motor. The resultant force exerted by the rope on the load is shown in the diagram. ठीक है, force given है जो जो लग रही है। Okay. In each diagram, the load moves in the direction of a force and takes 10 seconds to travel 1 meter. Which has the greatest power? आपने greatest power निकालनी। Power is equals to what? Work done divided by time। ऑप्शन ए को देखो, फोर्स क्या है? 12, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? 1, टाइम क्या है? 10। 1.2 वोल्ट्स कम्स आउट टू बी योर पावर। बी पे आ जाओ, बी में आपकी पावर क्या हो जाएगी? वर्क डन ओवर टाइम। फोर्स इज 8, डिस्टेंस इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम, दिस पावर कम्स आउट टू बी 0.8 वोल्ट। सी पे आ जाओ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। फोर्स क्या है? 10, डिस्टेंस क्या है? 1 डिवाइडेड बाय टाइम, पावर कम्स आउट टू बी 1 वोल्ट्स। डी में भी पावर निकाल लो। फोर्स क्या है? 4, डिस्टेंस क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 10, पावर कम्स आउट टू बी 0.4 डब्ल्यू। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर कहाँ है? इन ऑप्शन ए। Okay, let's see this. The electrical energy supplied to a kettle is this 600 kilojoules. Of this energy, 45 kilojoule of energy is transferred into the surrounding. 15 kilojoule is used to heat the casting of the kettle. The remaining energy is used to heat the water. तो बेटा water को heat करने के लिए कितनी energy use हो रही है? What is the output energy? 600 minus 15 minus 45. The energy used to heat water is 540 kilojoules. You have to calculate the efficiency. Efficiency किस तरह आती है? Energy output divided by the energy input. Output energy क्या है? 540 kilojoules. Input क्या है? 600. 0.9 is your efficiency. B is your answer for 15. Efficiency is 0.9. How is heat transferred from the vacuum? Vacuum में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ radiation. C is your answer. Let's further move ahead. 17 पे आ जाओ। A metal cube contains boiling water. अच्छा जी, इसमें अब क्या पड़ा हुआ है? Boiling water। इस पूरे बॉक्स में boiling water है। Each vertical side of the cube is painted a different color or has a different texture. Identical thermometers are held at equal distances from each vertical face. Near which face does a thermometer reads the greatest temperature? भाई greatest temperature कब आएगा? When you have a black color. तो ये white वालों को तो cancel कर दो। And your surface is dull. A is your answer. Dull black color जब होगा तो you will have the greatest emission of heat. You will have the greatest temperature on the thermometer. 17 का answer is it. This is excluded from the syllabus. Let's move ahead. This is also excluded from the syllabus. Let's move ahead.
अच्छा, लेट्स सी दिस. Steam at 110 degrees centigrade condenses on a surface to form water droplets at 100 degrees centigrade. Okay. What happens after the steam comes into contact with the surface? बेटा क्या होता है जब steam जो है comes in contact with the surface? The molecules slow down and absorb energy from the surrounding. देखो molecules slow down तो होंगे. Why? Why will molecules slow down? Because temperature आपका कम हो रहा है. And we have studied temperature is directly proportional to kinetic energy. टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. सो मॉलिक्यूल स्लो डाउन तो होंगे. ऑप्शन सी एंड डी गेट कैंसल्ड आउट. Secondly, can you realize steam, that is gas, is getting converted into what? Liquid. गैस से जब आप लिक्विड में जाते हो तो व्हाट हैपेंस? बॉन्ड फॉर्म होते हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है? इमिटेड टू द सराउंडिंग. बी इज योर आंसर. 20 का आंसर इज बी. हमेशा जब भी आप गैस से लिक्विड जा रहे होते हो या लिक्विड से सॉलिड जा रहे होते हो, बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग. हाउएवर, जब भी आप सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस जा रहे होते हो, एनर्जी रिक्वायर होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स. Which list shows how the state of matter in the expansion from the smallest to the greatest? Smallest expansion किसकी होती है? सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की. डी इज आंसर. अच्छा, ये 20 के लिए ना एक की पॉइंट लिख लो. मुझे लग रहा है क्वेश्चन 20 के लिए की पॉइंट लिख लो. जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप जा रहे होते हो, यू नीड टू एब्जॉर्ब एनर्जी. व्हाई एब्जॉर्ब एनर्जी? बिकॉज बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ठीक है. जब भी आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे होते हो तो आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है. व्हाई? बिकॉज बॉन्ड्स आर ब्रोकन. जब भी आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जा रहे होते हो, यू नीड टू इमिट एनर्जी. व्हाई? बिकॉज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. क्योंकि यहाँ पे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जब आप जाते हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन 22. Which row describes boiling and evaporation of a liquid? Boiling occurs at any temperature. No. Bubbles form throughout the liquid. Yep. C और D cancel हो जाएगा. Evaporation क्या करता है? Produces cooling. B is your answer to 22. 22 का आंसर क्या हो गया? B. आगे बढ़ते हुए let's move ahead. A hair dryer is used to blow air across the surface of water in a beaker so that the water evaporates. What increases the rate of evaporation of the liquid? Decreasing the speed? No. Increasing the surface area. Surface area increase करोगे, evaporation obviously increase हो जाएगी. 23 का आंसर है सी. आगे बढ़ते 24 पे आ जाओ. The diagram shows a ray PQ reflected by mirror X to a parallel mirror Y. The reflected ray along RS is parallel to PQ. अच्छा, ये जो आर एस है ना, वो पैरेलल है किसके? रिफ्लेक्टेड रे आर एस है पैरेलल है किसके? पी क्यू के. ओके. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द एंगल बिटवीन पी क्यू, ठीक है, ये वाली रे, एंड क्यू आर इज 45 डिग्री. नहीं, एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज 90 डिग्री. परफेक्ट. द एंगल बिटवीन क्यू आर and RS is 180 degree. No, that is also incorrect. The angle of incidence of PQ on mirror X is 60 degree. No. The angle of incidence of QR on mirror Y is equals to 45 degree हो सकता है. This is your normal, this is your 45 degree का angle. Yep, that's possible. D is your answer. 24 का आंसर could be D. अच्छा जी. So an object is viewed from a thin converging lens. Okay, ऑब्जेक्ट को हम थिन कन्वर्जिंग लेंस से व्यू कर रहे हैं. परफेक्ट. द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ टू रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन आई. ओके, तो मतलब यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है. कैन यू रियलाइज इमेज का एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड, ऑब्जेक्ट का एरो इज ऑल्सो पॉइंटिंग अपवर्ड. इसका मतलब क्या है? इमेज होगी अपराइट. ऑल्सो अगर आप एनालाइज करो तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? येलो डिस्टेंस.
इमेज की हाइट क्या है बेटा? ये ब्लू वाला डिस्टेंस। इमेज हैज बिकम लार्जर, बी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। वॉयलेट एंड इंडिगो लाइट हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। Which three colors in order of increasing wavelength follow indigo? क्या मैंने आपको ये एक्रोनिम पढ़ाया था विबग्योर? इंडिगो के बाद सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की, फिर ग्रीन, फिर येलो। एनी ऑप्शन लाइक दैट? 26 का आंसर इज बी। 27 पे आ जाओ। साउंड वेव। साउंड वेव कौन सी टाइप ऑफ वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज पॉइंट एक्स? पॉइंट एक्स पे देख रहे हो सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर है, दैट इज अ कंप्रेशन। ए इज योर आंसर। 27 का आंसर ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। A man stands between two buildings P and Q। ठीक है, एक मैन है जो कि स्टैंड कर रहा है between two buildings P and Q। He is 50 meter from P and 200 meter from Q। ठीक है। He sounds a horn। ठीक है, ये एक हॉर्न इमिट करता है या एक साउंड इमिट करता है। He hears the first echo from building P। अच्छा जी, आप बिल्डिंग P से फर्स्ट एको किस तरह हेयर करोगे? If the sound travels like this, hits the building, then returns back। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट echo क्या है? 50 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। अच्छा भाई, सेकंड echo आप किस तरह हेयर करोगे? या हाउ विल यू हेयर द echo फ्रॉम बिल्डिंग क्यू? योर साउंड विल गो लाइक दिस, हिट्स द बिल्डिंग, कम्स बैक टू इट लाइक दिस। दिस इज 200 मीटर, दिस इज 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 400 मीटर। You have to calculate the speed of sound। Speed of sound किस तरह calculate करेंगे? Change in distance over change in time, t2 minus d1 over t2 minus t1। t2 क्या है? 400 meters। d1 क्या है? 100 meters। What is the difference in time between the two echoes? 1 second। Speed of sound क्या आ जाएगी? 300 meters per second। B is your answer। 29 पे आ जाओ। What is one use of ultrasound? Cleaning jewelry। A is your answer। What is the distribution of charges? अगर यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाओगे तो बेटा क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे सारे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो सी इज योर आंसर। सिंपल। 30 का आंसर क्या हो गया भाई? सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा। टू मेटल स्फेयर्स, ओके, are mounted on insulating stand। Sphere X is initially uncharged and sphere Y is initially positively charged। ओके, स्फेयर Y पे इनिशियली क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज। A rod held in insulating handle is placed in contact with X and Y। अच्छा जी, X और Y के ऊपर आपने ये रॉड प्लेस कर दी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। दिस विल इंड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ऑन X। तो चार्ज ऑन एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चार्ज ऑन वाई भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिंपल। द डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट। विच रो डिस्क्राइब्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यू आर फ्लोइंग फ्रॉम वाई टू एक्स। बी इज आंसर। A charge of 0.4 coulomb passes through a resistor in 1 second। In 2 seconds, 20 joules of thermal energy is produced in the resistor। What is the potential difference? Potential difference निकालना है भी। How will you calculate the potential difference? Very, very easy। Charge given है, time given है, can you calculate the current? Current is equals to what? Charge over time। चार्ज क्या है? 0.4 कूलम्ब डिवाइडेड बाय टाइम। करंट क्या आ गया? 0.4 एम्पेयर्स इज योर करंट। ओके। आपकी एनर्जी कितनी है? 20। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। कैन आई से एनर्जी इज इक्वल टू आई वी टी। एनर्जी क्या है? 20। करंट क्या है? 0.4। वोल्टेज हमने निकालना है, टाइम क्या है? 2। 20 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू योर वोल्टेज। क्या आप वोल्टेज निकाल सकते हो? आई गेस वोल्टेज 25 आएगा अकॉर्डिंग टू माई मेंटल मैथ्स, एंड according to the calculator as well, it is coming out to be 25। C is your answer। आगे बढ़ते हैं। Which meter measures the current in resistor 2? भाई, current in resistor 2 हम कैसे measure कर सकते हैं? Using an M meter in series। D is your answer। अच्छा जी। Now
When the flash on a camera is used, there is a charge of 1.5 coulomb passing in a time of this. Okay. The average voltage is this. Okay. You have to calculate electrical energy and electrical power. बेटा क्या आपको ये याद है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज वोल्टेज इनटू चार्ज इज इक्वल टू योर वर्क डन और एनर्जी वोल्टेज क्या है 3600 चार्ज क्या है 1.5 is equals to your work done that is 5400 joules. Can you calculate the power? Yes, power is equals to energy over time. Energy क्या है 5400 टाइम क्या है भाई 0.003 seconds. Your power comes out to be 1.810 is the power of 6 volts. D is your answer. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows an electrical circuit which lamps light up when switch S is closed. S1 is closed and S2 is open. S1 को आपने क्लोज किया हुआ है S2 को आपने ओपन रखा हुआ है. If switch S1 is closed, what will happen? This will be your circuit. Lamp 1 and 2 will be light up. C is your answer for 36. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows a hair dryer. Which statement explain why the hair dryer does not need an earth wire? It has a live wire. No. It has a neutral wire. No. It has double insulation. Yep. Either you can place in double insulation or earth wire. Each of them will protect you from an electrical shock. Which quantities are represented by the direction of finger P, Q and R? P क्या represent करता है force, Q क्या represent करता है magnetic field, R क्या represent करता है current. 38 का answer is D. Let's further move ahead to 39. Which change will increase the size of reading on the ammeter? बेटा ammeter पे जो करंट आ रहा है उसकी रीडिंग को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय पुशिंग द मैग्नेट इन फास्टर. अगर आप मैग्नेट की स्पीड इंक्रीज करते हो कटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, आपकी एममीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी. सिंपल. Electrical power is transmitted by cables over long distances at very high voltages. वोल्टेज हाई रखने का फायदा क्या होता है? आपका करंट लो हो जाता है. What are the effect of using a high voltage transmission system? करंट आपका लो हो जाएगा. If your current is low, what is the formula of power losses? I square R. करंट लो हो जाएगा तो पावर लॉसेस लो हो जाएंगे. डी इज योर आंसर. पावर लॉसेस लो, करंट लो. 40 का आंसर इज डी. If you have any question in this paper, you can ask right